Now let us look at some of the empirical methods for vendor selection. Vendor selection के लिए हम कुछ empirical methods को देख लें. Empirical methods essentially use some kind of relative importance or weight for the various criterias or ratings. आप ratings कह लें, weights कह लें. आप एक importance के हिसाब से, criteria के हिसाब से एक weight दे देते हैं और ranking of your vendors with respect to that selection criteria. So first we need to define the selection criteria. On the basis वो selection criteria आपकी quality, price, delivery और timeliness वगैरह पे मौजूद हो सकती है. The selection criteria may include objective as well as subjective factors. So there would be some factors which you can measure that would be objective in nature. There would be some factors which are subjective in nature. तो उनकी basis पर ये किया जाएगा. Let us look at one diagram. Now, if you see the different categories, the category of vendors, जिस तरह हमने classification की पहले अपने vendors की, उनको जरा सामने रख लें. If you can remember that, vendors are similar under all conditions. The probability of error was high, but the consequence of error was very small. बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होता. Decision type is a routine decision. Then, vendors differ significantly. The classification 2, category 2. One vendor is superior under all conditions. The probability of error would be low, but the consequence of error would be very high. So decision type would be routine. And vendors differ significantly. The best vendor depends upon certain future conditions or certain conditions. Probability of error would be high. आपका consequence of error may be very high. It's a complex, requires careful analysis. ये आप routine decision नहीं है. ये कोई स्टैंडर्डाइज डिसीजन नहीं है जहां पर आपका कोई भी एक थ्रेशोल्ड है, कुछ कंडीशंस है जिस पर एक वेंडर जो है वो दूसरे वेंडर से बेहतर है. नाउ डिक्सन इन 1966 ही डिफाइंड डिफरेंट फैक्टर्स एंड रैंकिंग. तो वो फैक्टर्स जो हैं उसने डिफरेंट एम्पिरिकली ही कलेक्टेड डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड ही प्रोवाइडेड द मीन रेटिंग्स ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स. डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है. सो इट वुड बी फ्रॉम रैंक 1 टू द लास्ट रैंक. आपके पास आखिरी रैंक तक जो है वो मौजूद होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है. एंड योर मीन रेटिंग वुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. दैट मींस द हाईएस्ट वुड बी द फर्स्ट वन एंड द लीस्ट वुड बी फॉर द लास्ट रैंक. इफ यू सी दिस टेबल, आपकी जो इंपॉर्टेंस भी उसके साथ में जो है वो बता दी गई है. क्वालिटी इज द फर्स्ट वन विद द मीन रैंकिंग ऑफ. ये जो एम्पिरिकली डाटा कलेक्ट किया गया उस डाटा की बेस पर डिक्सन ने जो है वो मीन रेटिंग दी थी. तो 3.508 स्टिल ट्रू. क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. देन डिलीवरी विद द मीन रेटिंग ऑफ 3.417. देन परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑलमोस्ट 2.998. वारंटीज एंड क्लेम 2.849. ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ गए. देन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड द कैपेसिटी, प्राइस, टेक्निकल कैपेबिलिटीज, फाइनेंशियल पोजीशन, योर प्रोसीजरल कंप्लायंस, your communication system, reputation and position in the industry, your desire for the business, your management and organization. These were the considerable factors till 13. Afterwards, you have the average importance factors. उसमें आपके पास repair services, attitude, operating controls, impression, packaging ability, labor relation record, your geographical location, amount of past experiences. These were like in the average one. And slightly important ones were the reciprocal arrangements and training aids. So if you see this table, तो आपके पास रैंकिंग मौजूद है. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में all of these ranks are not required. You will provide importance or weight to some of these characteristics. But the point is, it's an exhaustive list, almost an exhaustive list. So if you want to use for your vendor selection, जितने ज़्यादा criteria आप उसके अंदर करेंगे, yes, your selection criteria would become complex. But at the same time, the probability of making an error as well as the consequences of that error would be very reduced. Thank you.